अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम डन करने वाले हैं मायो का मेकअप। देखें जी, ये सबसे पहले मैंने ली है जी, ये मेरी अपनी ही बेस है। इसका लिया है मैंने 45 शेड। इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी मैं स्पंज की मदद से। ये बेस बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मैं मिनरल बेस के साथ ज़्यादा काम करती हूँ और मिनरल बेस बनाने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया है आपके साथ कि वो मिनरल बेस किस तरह से बनाएंगे, और उसको फुल अप्लाई करने का तरीका भी मैंने बताया है कि सबसे पहले हमने ये बेस ले लेनी है, हांडी बेस। ये मेरी अपना प्रोडक्ट है। इसका लिया है जी मैंने 45 शेड। इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। स्पंज की मदद से भी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होती है और ब्रश की मदद से भी, आप जिससे करना चाहें। ये लिया है लूज़ पाउडर मैंने, क्यूट का लूज़ पाउडर है। इसको पूरे फेस पे हम अप्लाई कर लेंगे इस तरह से ज़्यादा। उसके बाद हम इस पे वाटर बेस अप्लाई करेंगे। इस वाटर बेस के हम लोग 3 कोड अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारी परफेक्ट बेस तैयार हो जाएगी। सबसे पहले ये वाली वाटर बेस मैंने पहला कोड अप्लाई कर लिया है। इसको स्पंज की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये मैक का डल गोल्डन शेड लिया है मैंने, और ये लिया है जी मैंने येलो शेड। ये भी मैक का ही है। इसको अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लेंगे। और ये लिया है मैंने ग्रीन शेड। इन दोनों शेड्स को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ मैं आउटर कॉर्नर पे ब्लेंडिंग करते हुए। ये लिया है जी मैंने मैक का सीलर। इसके साथ हम अपने ग्लिटर्स को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इस पे पहले मैंने सीलर लगा लिया है और इसके ऊपर मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। लैशेस लगाने के लिए मैं क्रिस्टाइन की लैशेस गम यूज़ करती हूँ।
इसमें दो किस्म की गम है, एक ब्लू में है और एक ब्लैक में है। पहले मैं ब्लू वाली यूज़ कर रही थी, अब मैं ब्लैक वाली यूज़ करती हूँ। ब्लैक वाली ज़्यादा बेस्ट है ब्लू वाली के मुकाबले में। और ये वाटर बेस का मैंने दूसरा कोड भी अप्लाई कर लिया है। तो ये कितनी शाइन आने लग गई है बेस में जो हमने दूसरा कोड अप्लाई किया है। और ये यूज़ कर रही हूँ मैं मिस रोज़ का जेल आईलाइनर। मिस रोज़ का जेल आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसको देखें जी किस तरह से अप्लाई करेंगे। ये काफ़ी क्लोज करके दिखाया है मैंने ताकि जो बिगनर्स हैं वो अच्छे से देख के सीख सकें कि हम लाइनर किस तरह से अप्लाई करेंगे। ये ली है जी मैंने मिस रोज़ की वाइट पेंसिल, और सॉरी मिस रोज़ की नहीं, स्वीट फेस की है ये वाइट पेंसिल। इसको अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लिया है।
आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की ब्यूटी टिप्स एंड सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। दुआओं में याद रखिए। देखें जी, फाइनल ज्वेलरी वगैरह नहीं पहना के मैंने दिखाया, जस्ट सिंपल सा मैंने आपको दिखा दिया है कि क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट था, सीज़न चल रहा है, बहुत जल्दी में ये वीडियो बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।